आणि तेच बोलतात 4:30 लवकर ठेवा 4:15चा क्लास आणि उशीर येतात. आता बोलली तुमचा उशीरच ठेवणार. अच्छे से अभी मैं स्टार्ट करूँ फिर अगेन which chapters today? Dear departed and ज्यादा बस मेरे को पता चलेगा वैसे भी बोल राइट रिवाइज कर अभी टाइम है ना तो सोना है रिवाइज कर कितने क्वेश्चंस फुल पोएम कितने क्वेश्चंस दैट आई सी that I will see मैंने थोड़ी बनाया है सी ऑन द स्पॉट पूरा चैप्टर पढ़ना देखो क्या फर्क पड़ेगा दो हो Lord 1 week now don't can ये बहुत बड़ा है वो बहुत छोटा है do it now why you now wasting your time question answer time होगी waste करिए when we start only suits a picture. Okay.
This is the future leader. Sure. Let's start now. It's almost 4:30, 4:28 हो गया. Your time. Pick up your notebooks. This is okay. 2 years ago हो गया. This is 2 years. Sorry. अभी next time से late होएगा. ए इधर इधर this time. और MCQ test ना. तू बोलती है 450 का हमारे लिए रखो. अरे मैम लेट. अरे मैम 4 8 ना 4 8 वहां पर लिखी है 10 और पहले का पकड़. और पहले का पकड़. मुझे क्या पता था ऐसे होने वाला है. कैसे? मुझे क्या मालूम ऐसे होने वाला है. मैं भी सिर्फ I30 को रखती. मुझे क्या मालूम था ऐसा होने वाला है. ना 5:30. हाँ हाँ अभी 5:30 का कर लो. 5 हां नेक्स्ट बैच. चल बुकी नहीं है. भेज दे. 5 मिनट चलेगा. Okay, so first MCQs I'm asking you. MCQs in the sense one word or one phrase answers. So you need not write the question. You need not write the question, only write the answer. Okay, pehla dear department. So your extract is this one.
When Mrs. Slater is saying, I am amazed at you. Okay? I am amazed at you, Victoria. I really am. How can I go gallivanting about in the street with your grandfather lying dead and cold upstairs? I don't know. Be off now and change your dress before your Aunt Elizabeth and your uncle then come. It would never do for them to find you in colors. Yeah. Pushing side. Excellent. The first question is, Mrs. Slater. Question don't write, only write the answer. Mrs. Slater is angry with Victoria because. Mrs. Slater is angry with Victoria because. And you write the answer. No. Any option? How many want options? 2 want, 3 don't want. Majority wins. Huh? नाम खराब कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हम दोनों नाम खराब कर रहे हैं ऐसा बोल. चल, I read the options. अरे यार. मैम लिख दिया ना मैम. ठीक है, पढ़ो. बड़ा कंफर्म भी हो जाएगा ये. पढ़ो. है ना? If your words are a little different, you have written on the same lines. Okay. क्या करेंगे जयपुरिया वाले? Representing जयपुरिया से. और हम तीनों डीएवी से. ये लोग बोल सकते हैं कि represent. तुम क्या हिसाब से representing हो? Okay, so your options are, there are 4 options. Mrs. Slater is angry with Victoria because she is moving around too much. She is wasting time in the street. She hasn't changed her dress. She is not bothered about her grandfather's death. मैंने तीनों मिला के लिखा है. ये देखो, इनने भी बहुत अच्छे नाम रखे. इनमें से एक लिखना है. Okay, A is she is moving around too much. B, she is wasting time in the street. C, she hasn't changed her dress. D, she is not bothered about her grandfather's death. ऐसे. एक ऑप्शन लिखना. वो पैराग्राफ में तीनों बताया. Answer is only one. According to the self-esteem. Next one. Answer सही बता दिया. Second लिखो and the question is. Relax मत कर. कट कर देना. Really? Second one. Aunt Elizabeth and Ben are paying a visit to. Aunt Elizabeth means why? A visit for what? So Aunt Elizabeth and Ben are paying a visit to. Listen carefully. Option A. Offer condolence for the old man's death. B. Condolence. दोनों ऐसा. कम आसान. पूछ सकती हूँ. साथ देना ऐसा. अभी समझो ना सेंटेंस से. हमें तो मिलने का. किसी के भी पूरे टाइम पे साथ देना. वही तो. Offer condolence means celebrate for the old man's death. क्या हो सकता है? नाम तो सेलिब्रेट भी होता है बता है. मारने के बाद सेलिब्रेट भी होता है. ये कुछ भी अपना प्रूव करेगी. अभी बोलती होता है सेलिब्रेशन होता है. हाँ. कौन सा लिख रहे हैं? अगर उसमें क्या लिखा है फिर? Option A, offer condolence for the old man's death. B, check upon the old man. C, lay their hands on his belongings. D,
To show Mrs. Slater their sorrow over death. अरे अच्छा क्वेश्चन आता है तो हाँ ABC लिखा तो चलेगा हाँ like A नहीं ए पूरा आंसर just नो देवी से नहीं वो मेरा मतलब वो था बट गलती से मैंने ए के मतलब बी लिख दिया तो चुपचाप पूरा अल्फाबेट ऐसे okay वहाँ पे से लिखा है once more हाँ second and last so second and last time so Aunt Elizabeth and Ben are paying a visit to offer condolence for the old man's death, check upon the old man, lay their hands on his belongings, to show Mrs. Slater their sorrow over death, over the death. Third one. Mrs. Slater, question is, Mrs. Slater appears to be a lady who is very particular about. Mrs. Slater appears to be a lady who is very particular about A. Ceremonies, B. Relatives, C. Condolence, celebrations, and D. Mourning dresses on death, means party dresses on death. So, four options she is particular about ceremonies, relatives, condolence, mourning dresses on death. हाँ, इसका इतना हो गया. This part you just marked. This part, your answers. One is C, B, D. Second is D, and third is also D. Second is D. D. एक Q. हम क्या आइडिया She is not bothered. Which one? Second one, no? Second one was to show Mrs. Slater their sorrow over the death. but they were She wants to show. वो तो आने के बाद. हाँ Her intention is D. Okay? क्या मेरा Mark right or wrong. Okay? C, D, D. Second. पहले आता है, but she is not bothered about grandfather. she's not bothered मैम वो गुस्सा क्यों थी क्योंकि इसने अभी भी कलरफुल ड्रेसेस पहन के रखे थे इसलिए तो उसने पार्टी ड्रेस पहन के आई. पहला नहीं था उसका. तुमने क्या लिखा सेकंड Sponsor. So my heart stick to break. Second is this. Second extract is this, where Mrs. Slater is saying, "My heart stick to break when I see the trifles that belong to grandfather lying around and think he'll never use them again." Here, you'd better wear these slippers of grandfather's now. It's lucky he just got a new pair. First question. Okay, so mark this as 2-1. Mrs. Slater is very disturbed because ABCD. A. Her father is dead. B. His things are lying scattered. C. She has to make arrangements. D. She cannot afford to have his things wasted. A. Father is dead. B. Things are lying scattered. C. She has to make arrangements. D. She cannot afford to have his things wasted. Second one. Mrs. Slater is very resourceful as. Question is, Mrs. Slater is very resourceful as means because. Resourceful. ABCD options. A. She has managed to make all the arrangements. B. She is able to use her father's slippers. C. She has managed to inform her sister. D. She has managed to get tea ready for her relatives. A. She is resourceful as. She manages to make all the arrangements. She is able to get her father's slippers, use her father's slippers. C. She has managed to inform her sister. And D.
She has managed to get tea ready for relatives. Done? Third question. From the above statement, means this statement, the in extract, it is clear that Mrs. Slater was 4 options: resourceful, miserly, greedy, and vain. Vain. Of no use. Resourceful, miserly, greedy, vain. And so here now 3 are over. So the first one was B. She doesn't want to have things wasted. Second is B. She is able to use the slippers. Third is C. She is greedy. B, C. A4. Then the questions. Ancient variables. This is your extract. Victoria saying, are we pinching it before Aunt Elizabeth comes? Henry says, Henry is shocked. He says, no, my child. Grandpa gave it to your mother before he died. No? First question. So this is 3-1. First question is, Victoria's remarks reflect upon the behavior of the adults. Victoria's remark reflects on the behavior of the adults that they are. Who is? That the elders are A. Hypocrites, B. Mercenary, C. Greed driven, and D is clever. Done? Second, Henry proves to be dash from his statement. Henry proves to be dash from his statement. 4 options. A is submissive, not dominating, submissive, just the way of us. Gullible, B gullible, C henpecked, and D vulnerable. Third henpecked, जो बीवी का ही सुनता है, henpecked husband. Henpecked, H-E-N and hyphen and P-E-C-K. क्या बोल रहा है? Big option. A submissive, B gullible, C henpecked, gullible. This can be fooled. Options का ही नहीं.
लिख जयपुर यार फोन फोन लाता ही नहीं हूँ मैं। नीचे क्या कर रहा है अभी? हाँ? फर्स्ट सडनली पर्स उठा रहा है। वो आपको रिश्वत दे किसको रिश्वत दे रहा हो? ये 100 रुपए में काम है सर। उसको 100 रुपए में काम है। 100 रुपए में काम अच्छा प्रॉफिट है। गलत बात दे रहे हैं। तू उसको 100 मत दे, तू मेरे को 50 दे, मैं तेरे मेरे को को 10 दे 50 दे तो 5 दे सबको देते हैं हम सबको लेंगे। Okay. So that submissive, gullible, henpecked, vulnerable. Third question means third subpart. Such pretensions, such pretensions and manipulative. पूरा sentence पढ़ें फ्रेंड. Sentences, such pretensions, such pretensions and manipulative behavior ends up dash the lives of children like Victoria. How does it affect the lives of children like Victoria? A. Benefiting. B. Guiding. C. Harmful. D. Confusing. Okay? So now it is one is A, C, D. Hypocrites, henpecked, confusing. क्या? अब इसका टोटल करो कितने हो गए ये? 9 हो गए ना? 3. So give it out of 9. 2. 3 Wow. Therefore, you are on par. What about yours? Really? सबसे पहले सबसे पहले वाले का पहला देखना पड़ेगा. She was not wearing this. Change. हाँ C it was C. मैंने उसने लिखा ही नहीं था. C. तो मैं वहाँ पे देखी थी. Low marks. 6. Not 2 and 3. And I देख ले तेरा 7. ये harmful क्यों नहीं है? हाँ. Confusing क्यों है? वो भी कर It is harmful on her life ना. आगे जाके वही इसने harmful ही लिखा होगा. हाँ इसलिए पूछ रही हूँ. Confusing है. क्यों? हाँ, because they don't understand. They are being manipulated. So one time something, second time the other. Now write down main question 2. I'll look for rhyme. Rhyme था ना दूसरा चैप्टर. हाँ. Line of the ancient world. Sorry. ये पैसा दे हाँ अब तू लेगा दूसरा. ये एरिया में ना स्कूल जाके तुमसे अच्छे डेली खाना देखे भी बोल रहे हाँ हमारे महाराष्ट्र की डेली बातें सबसे बेकार डेली खाना है बट तुमसे अच्छे का भाई
मेरे को हैंकी स्मेलिंग गलत है Johnny, Johnny. Come on. Johnny, Johnny. Do you know Johnny, Johnny? No. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating sugar. Come on. Eating sugar. Eating sugar. अरे मैंने राय I'm going to बोल आरच बोल अरे राय मैं नहीं आता हूँ नहीं नहीं आता तेरे को eating sugar No, Papa. no papa telling lies No, Papa. नहीं आता चल इसलिए हम झूठ बोलता है नहीं नहीं आता कुछ नहीं आता नर्सरी स्किप नहीं क्या 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 एकदम एडवांस लेवल पे पहुंच गए नर्सरी होता है अम्ची अम्ची वो भी नहीं और कौन से थे किसके नाम को twinkle twinkle अरे गो little star Jack and Jill went up the hill together Jack and Jill आता है बोल हॉस्पिटल है क्लिनिक है वही देखा इसके लिए इसको हम not नाइट this सैलरी word कौन सी तो कोई बता दो कौन सी भी हम भी तो हमारे शुक्र अम्ची रमटी क्या क्या बोल रहा ये तो तेरा बड़ा अच्छे से देखता है मैथ की सर है यार ये तो मैं सर नहीं है आशीष नहीं हूँ भाई को रोड अच्छे से पिक करना ठीक है रोड तेरा अच्छे से रोड है चूज ना करना अच्छे से नाइन्थ वाली वो है द रोड नॉट तेरे को टेकन बाय द क्रॉस तमिल ये इसने नाइन्थ में नहीं पढ़ी है ना एडवांस है वो मैम उसमें टाइप दिया नहीं चल दिया वो जब पहले दिन आया ना जयपुरी में था वो पहले दिन आया ना उससे परसेंटेज पूछा वो था 93 अब वो तो स्कूलिंग ही नहीं किया भाई पकड़ा उसने गया सब स्किप करके डायरेक्टली 10th पे पहुंच गया प्री प्राइमरी स्किप एनी नर्सरी नाम यू डोंट नो कुछ भी एबीसीडी नहीं क्या होती है ओके चलो दिस इज योर एक्सट्रैक्ट ओके it is an ancient marina it is an ancient marina and he stoppeth one of three by thy long grey beard and glittering eye how wherefore stoppest thou me first one so main one and first ये पोएम उससे थोड़ा सा ऐसे rhyming है देखो मैं आप समझते नहीं हो गया समझते नहीं यार हम लोग ये इसका थिंकिंग एकदम एडवांस है हमारा उतना विलियम एडवांस शेक्सपियर का पोता है ये हाँ उसने मुझसे ट्रेनिंग की थी चुपचाप बैठ जा इसका first time when I started with Julius Caesar his situation was we have already done this beginning part I've already done it and when I finished no we are not done anything हां स्टार्टिंग का पार्ट किया फिर समझ ही नहीं आया उसके बाद अरे आई होप अभी तो समझा मेरे कराने के बाद तो समझा ना क्या हमने पहले स्टार्टिंग में लगे फिर मैं एक दो दिन के एब्सेंट हो गया फिर मैं प्रेजेंट था तो भी एब्सेंट था नहीं फिर मैं लास्ट में गेट हां क्या करना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे मारो चलो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज whom does the ancient mariner stop इसमें ऑप्शन दे दो okay I'll give it क्या पता वापस A I'll give you A someone from the wedding band B a wedding guest C some sailor D the bridegroom okay A is someone from the wedding band B a wedding guest C some sailor and D the bridegroom sailor इस पे करें second one ये भी गलत है। second where are they going option A to sail in the sea
B to a friend's house. C to the wedding. D for some party. Where are they going? And तुम लोग एक और क्या करो? What is happening? क्या बोल रही हो? X के बाद पूछा क्या तो Z बोल रही Now one thing. He's so proud of you. स्ट्रेट बोली स्कूल को रिप्रेजेंट करने गए थे हम लोग काम में Represent. तुझे लेके उसका नाम ही मत तो भैया. नहीं मेरे को ऑफिस में रखा था Options I'll tell you. Now listen, I'm reading. सचिन Hey, सुनो. I'm reading the options again. And अभी आगे से मैं जब सारे options पढ़ती हूँ ना क्या हो रहा है? I can also notice it. Answer आता है ना those who know the limitation please start. So that will be giving a hint to those who don't choose. So wait for all to be read and then you are read. नहीं तो x के बाद z आता है वो समझ जाएगा कि x के बाद z आता है एक्चुअली है ना. याद है सही बता Okay, option 1 I tell you. Where are they going is the main question. A to sail in the sea, B to a friend's house, C to the wedding, and D for some party. Okay, Question 3. अब तो आता है तो शर्म कर जरा. Yeah, party. Third one. What is the most striking feature of the marina? What is the most striking feature of the marina? Option A, his shabby option A, his shabby clothes. Option B, his thick beard. C, glittering eyes. D, weak hands. A, shabby clothes. B, thick beard. C, glittering eyes. And D, weak hands. Then fourth one, it's when there are 5. So fourth one is how does the look of the marina affect that person? How does the look of the marina affect that person? A, intimidating. B, mesmerizing. C, impressive. D, ineffective. Intimidating, mesmerizing, impressive, or ineffective. Next is the third line. Okay? By thy long grey beard and glittering eye. Point out the poetic device used in that line. Options I am telling you. Okay, 3 options I am giving you here. One, A is simile, B alliteration, C metaphor. Alliteration. A is simile, B is alliteration, C is metaphor. By thy long grey beard and glittering eye. By thy long grey beard and alliteration. A is simile, B is alliteration, and C is metaphor. You see that? You see that? First one. Now this is okay. This I'll tell you later. So here your answers were B, B, C, B, B. First two are B. First one. Answers for option.
Wait now, first mark this because here is the sentence I'll have to again scroll. So first you're right, B. First two are B. Third is C. Last two are B. B. B, B, C, B, B. आपके ऑप्शन पे लगो Answer I got. B first was wedding guest. Then again B. Where were they going? To the wedding. तो आप ही बैठे हाँ इसमें B बोला ना? हाँ, ये हाँ C तो ये गलत होगा ये C होगा. Okay, so mark it as C. Next कौन सा बोला मैंने C. Okay, that is okay. Then next कौन सा बोला? C. B बोला. B बोला B, mesmerizing. Okay, that's okay. And next is alliteration, which is B. मैम क्या metaphor alliteration है है? Alliteration. क्या है? You can see the long grey beard and glittering eye. So you have the G and the G. अरे इतना दूर नहीं है stop मैडम By thy long grey, in what way metaphor? Full. How? ऊपर लिखा है How it is metaphor? Only that तुम लोग ने क्या लिखा? ये लोग ज्यादा सोचते ही नहीं है. तो गलती से वो आ गया. Explain how. You can see the G and the G. Yes, I can see it. I will see it. Then School में हम लोग glittering तो ये वो glittering का तो ये होगा it is you know वैसे बता रहा है कि वो ज़्यादा glittering है नहीं but metaphor की था वो तो actually it was his eyes caught the attention. वहाँ पे नाम बोल रही थी कि उसकी आंखों में ऐसे कुछ का experience था लंबा लंबा experience था Next one. one राउंड दिखाया मैंने. मैं तेरे को क्या बोला? Next is this, okay? ली रे बाबा. Ninth. I This ninth stanza. He holds him with his skinny hand. There was a ship for he hold of. Unhand me, greybeard moon. Eftsoons his hand dropped he. So this is name 2 and first one. Question is, why does the mariner use physical force to hold on to that person? Why does the mariner use physical force to hold on to that person? A, B, C, D, 4 options. A, he is very strong. B, he likes the wedding guest. C, the wedding guest does not wish to be detained. And B, he wants to impress him. A, he is very strong. Why does he use physical force? A, he is very strong. B, he likes him. C, the wedding guest does not wish to be detained. And D, he wants to impress. Second, explain the reaction of the other person. Yes. Okay, it says the other speaker, but the other person. What is the reason of his anger? Okay, explain the reaction of the other person and what is the reason for his anger. A, he hates the mariner. B, the mariner. तू पीछे मत देख reaction हाँ? ज़्यादा लग रहा है अभी क्योंकि कान ज़्यादा सुनने नहीं दे रहे थे नीचे देखने को कभी दिखाई नहीं देता चश्मा पहन लेते ये ना वो अपने को अपना गलती भी छुपाने के लिए झूठ भी ऐसा हक से बोलेगी कि कोई भी चुप हो जाएगा. सीधा हो जा चल सीधा हो जा. अरे माँ मुझको ऐसे बैठने नहीं हो रहा सच तुझे में बैठ नहीं हो रहा तो उधर गई सो उसे मैंने गलती नहीं की है सीधा बैठ.
तू सीधा बैठ। See now ये और अड़ेगी, I know her very well. ये ऐसी है। ये एक्शन कभी कर रही है because she knows मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। नहीं बट मैंने कुछ किया ही नहीं है। तूने कुछ किया नहीं लेकिन इसको इधर बिठाओ। क्लासरूम में इधर नहीं बैठती, चल बैठ सीधा। मैं उधर की मेरी हाँ तो तुझे बोलने का ये तो चुप करेक्ट ना? मैं किसको बोलने के बाद में नहीं समझता है और किसको नहीं बोलना तो भी समझ। ये तो यार मैंने तेरे को बोला इसलिए बैठ सीधा और तू देख ये एकदम बुरी है। हाँ she do गुंडा करती है तो boys also she's like that one महागुंडी she is। ये किसी का है हाँ तो है okay first so you wrote the answer हाँ फर्स्ट हो गया I didn't read all the options no B is very हो dirty गया First C one is हाँ second वाला what is the reaction of the speaker and what is the reason for his anger A he hates the mariner B the mariner is very dirty and shabby C he is desperate to attend the wedding D he is tired is tired and third one point out an archaic word from the above stanza archaic यार archaic word सब बोलता है best school in the world yeah I agree A अरे अपना स्कूल का नाम रोशन after करो बोलो A unhand B eftsoons C moon D dropped which is the archaic word मैं वापस एक बार पढ़ूं सोचो कि क्या हो सकता है वापस एक बार पढ़ूं गड़बड़ which है is the archaic अरे वो word नहीं ये वर्ड ऑप्शंस unhand B eftsoons C loon D dropped unhand eftsoons loon dropped क्या करूँगी क्या मैं मम्मी मैंने उसको देखा अभी मैंने उसको भी नहीं देखा इसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी मैंने इसको याद है खुद ही चला गया अब सवाल मेरे को दिखाई नहीं देता चल मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा मैं शक नहीं करूंगा ओके डन fourth one now explain gray beard loon your options are A dirty and sick looking B old and sick looking A dirty only B old and sick C crazy and mad D eccentric D सी क्या है काउंटर करो हमारे पास D A dirty appearance B old and sick looking C crazy and mad D नहीं eccentric है बात मेरे पास है नहीं है वाला वॉलेट निकाल के उसे लगा था वो देख रही ये चैप्टर उसको आता है तो बस उसको राइम नहीं आ रहा था स्पेशल बट उसको राइम और एक आंसर देख रहा है इसका आंसर देखो उससे उसका वो दोनों ने पढ़ गया गलती में एक तो पढ़ गया उसको पता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा बस उसको राइम नहीं आता था मैंने वो मैम का नाम है और 2x पे देख लिया वो बस और कुछ नहीं ओके मैम ने जो बोला so is it done 4 are done हाँ is there are 4 so 9 the options first just mark
CBSE. 4 ही है इसमें। हाँ, उसमें भी 9 थे तो ये भी पूछो। C is first is C. What is that? Does not want to be. Yes, does not wish to be detained. Then is C, he is desperate to attend. Then is B, eftsoons. And then is C, crazy and none. So 9. Give yourself marks. All of all. 2 or 3 or how much? All of all. What? 7. You? 5, 5. 8. 8. 7. Now I will give you one question from Shalimar. हम 2 मिनट बाकी है। क्या? 4 मिनट बाकी। 2 मिनट बाकी। 4 मिनट बाकी। बस 2 मिनट। हाँ 4। क्या होगा अभी? 4 मिनट बाकी। मैं तो अगले क्लास में पक्का मत। Yes. What's your total? 7 or 9 कितना हो जाएगा? 9 16. 9 9. Total? Representing क्या किया? देखो यार का average बोलो. 9 9. 8. So your average is 8.5. Do 3 is average, tell me. What's your total? 12. 13. 16 Yeah. 13. हमारा 8.5 41/3 करो। 10 के ऊपर Exact book? 13। 41/3 हाँ वो देखा होगा. What's the average? करेगा तेरा 13 point something। हाँ हमारा 8.5 कम नहीं है। Yours will be 8.5 exact because 8 and 9 no. So it will be 8.5. And yours is 13 point. something। Is it more than? 13.6 Huh? 6. 13.6. So it will be 14. If you round it off, it will be 14 and yours will be 9. Proud of you! Representing. Next class, what are we doing? Shady plot. Shady plot. Shady plot? Shady. What was that? अच्छा उसका टेस्ट चाहिए. Okay, so no, let's do virtually 2 and ना हमने लास्ट टाइम बोला था इसके बाद हम लोग शेडी प्लॉट लेंगे लेकिन मैम का नहीं मतलब बिल्कुल नहीं गलत है मैं इधर सुनो तो रुक. I want to one, we have 1 hour. So first we'll start with shady plot objectives like this only, and then we'll do virtually. Virtually through complete कोशिश करेंगे हुआ तो अच्छी बात है नहीं तो we'll पहले नहीं पहले जमा करेगा तू आराम से बोलती है ना. So next week shady plot. हाँ एक Come on time. What have you do? The train was late. Not my fault. छोड़ दे दे थोड़ा. You have the time indicator also. तो उसमें समझता हूँ. मैम उसमें बस एक ही वक्त का टाइम निकालो पूरा अपडेटेड आता रहता है. चेक कर थोड़ा ताकि यू आर नॉट लेट. ना कर सकते हो थोड़ा पहले वाला पकड़ के 4 बजे चलो बाय. क्या